आपका सबसे मेमोरेबल इंटरेक्शन क्या होगा विद द प्राइम मिनिस्टर एंड आपने उनसे क्या सीखा है? आई थिंक हिज एबिलिटी टू लिसन, इम्बाइब, ऑल्सो रिटेनिंग. एक मीटिंग हुई जहाँ पे कुछ 13-14 लोगों को बुलाया गया था प्री बजट डिस्कशन के लिए, एंड देन इन अ 30-minute स्पीच एट द एंड ही समराइज्ड ऑल ऑफ व्हाट पीपल हैड सेड. इन द कमिंग फ्यूचर थोड़ा करेक्शन इसमें आ सकता है या स्टेबल रहेगा? व्हाट्स योर व्यू? My best guess is that we see a time correction. So every 3 months you are gaining about 3 to 4%. The US owes the world $62 trillion. It owns $34 trillion of assets. The net international investment position is minus $28 trillion. Is it that India-US relations are on the stage of weakening, or what's your view? First is, how much is the US president really in control? What is something that is stopping India to become, let's say, like the global superpower? तो हमारे यहाँ क्या है, शहरों के पास कोई इंडिपेंडेंसी नहीं और शहर हमारे एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं. अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे अच्छी नहीं होती है तो कोई क्यों आएगा शहर में? सेकेंड इज द डिजायर टू डेवलप एंड ओन टेक्नोलॉजी. What are like some strengths apart from this and weaknesses जो हमें improve करने की ज़रूरत है so that we can also like become the developed economy? Biggest weakness is a lack of energy. GDP growth and energy consumption are very deeply interconnected. A second big issue is our inability to control tier 3 government. $1.85 के आसपास चल रहा है. That might become ₹60. So okay, when I say that, I should have clarified. वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे. मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माई ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज़ नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल. आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, मुकेश बंसल सर के साथ देखा मैंने एंड आपको काफ़ी क्लोजली फॉलो करते even on TV channels, and your journey has been very very inspiring. Like I wonder sometimes आप इतने ज़्यादा multiple roles कैसे कर सकते हो? You're a part-time chairman of UIDI and you're also a member of PM Economic Advisory Council. So like just wanted to understand कि ये जो roles है इसमें exactly काम क्या होता है and what are you like responsible for in these roles? My day job is with Axis Bank. मैं Axis Bank का चीफ इकोनॉमिस्ट हूँ और साथ में ही Axis Capital जो Axis Bank की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सब्सिडरी है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हूँ. मैं उनका हेड ऑफ रिसर्च / स्ट्रैटेजिस्ट भी हूँ. तो मुख्यतः ये रोल्स जो हैं ये काफ़ी इन्वॉल्व रोल्स हैं. हम लोग चीन की इकॉनमी पे, अमेरिका की इकॉनमी पे, ग्लोबल ट्रेंड्स पे, बिकॉज एक तो मुझे खुद क्यूरियोसिटी है कि इन सब चीज़ों के बारे में समझना चाहिए, और दूसरा जैसे हमारी इकॉनमी बड़ी होती जा रही है तब हमारे इंटरलिंकेजेस विद द वर्ल्ड, हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स के इंटरलिंकेजेस विद द वर्ल्ड आर ऑल ग्रोइंग. सो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट इज़ पावेल थिंकिंग, व्हाट इज़ ट्रम्प थिंकिंग, चीन की इकॉनमी में स्ट्रक्चरल फ्लॉज क्या हैं, चीन की करेंसी कहाँ जाएगी. इन सबको समझने के लिए इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, तो मैं बहुत पढ़ता हूँ. जैसे अभी मैंने एक वो केन्स की किताब है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस, वेयर ही प्रीटी मच criticized and said that the Treaty of Versailles after First World War was not going to work. He also said that the dollar system after the Second World War won't work. So इन सब चीज़ों को पढ़ने से काफ़ी पर्सपेक्टिव मिलता है. जो गवर्नमेंट रोल्स हैं तो काफ़ी सारे रोल्स हैं उनमें. तो EAC PM में है कि जब भी प्रधानमंत्री को ज़रूरत पड़ती है तो वो मीटिंग बुलाते हैं, और उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है. कभी कभार वो कहेंगे कि इस चीज़ पे रिपोर्ट लिखिए, इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, तो वो स्पोरेडिक काम होता है, वो कंसिस्टेंट परसिस्टेंट काम नहीं है. कभी कभार फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है, कभी कभार बहुत कम हो जाती है. आधार चेयरमैन का रोल जो है ये है तो पार्ट टाइम, लेकिन काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा रोल है. इसमें आधार में काफ़ी सारे बदलाव लाने हैं. जब आधार का फॉर्मेशन हुआ था 2009 में, तो काफ़ी विजनरी लीडरशिप थी. सो नंदन आई थिंक पुट टुगेदर एन एक्सेलेंट टीम, एंड जो भी उन्होंने जैसे डिजिटल आईडी क्रिएट की, ये सब लोग आधार कार्ड और प्रिंट आउट लेके घूमते रहते हैं, बट एक्चुअली है ये डिजिटल आईडी. बट हुआ क्या कि जब उन्होंने छोड़ा 2014 में, और उसके बाद फिर 2-3 साल तक काफ़ी ज़ोर से उसका एडॉप्शन इम्प्रूव हुआ. पहले 4-5 साल में एनरोलमेंट हो रहा था, उसके बाद
उसका अडॉप्शन इम्प्रूव हुआ। फिर वो प्रिवेसी के रिलेटेड काफ़ी सारे लॉ सूट्स आए, फिर आधार एक्ट को पास करना पड़ा। तो कुछ 5-6 साल उसके बाद फिर कोविड आ गया। तो काफ़ी समय से आधार एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो आगे नहीं बढ़ रहा था। वो इतना विजनरी सेटअप था इसका कि अभी भी काफ़ी कटिंग एज है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे बदलाव लाने हैं। तो उसमें काफ़ी समय जाता है। ये सोचना कि आधार ऐप को कैसे कहाँ ले जाएं, तो हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि जो ऑफलाइन ऑथेंटिकेशन है, जो पेपर प्रिंट आउट और पीवीसी कार्ड लेके लोग घूमते हैं, वो काफ़ी इनसिक्योर है, उसमें फ्रॉड आराम से हो सकता है। उसको हम अगर आधार ऐप पे, क्योंकि इतने सारे लोगों के पास अब स्मार्टफोन आ गया है, मैंने आधार संवाद शुरू कराया कि इट्स एन इकोसिस्टम प्ले। हम लोग डेटा लेके बैठे रहते हैं, अगर कोई यूज़ नहीं करेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम उसके यूज़ को कैसे इंकरेज करें, कैसे प्रमोट करें, तो अब हमने 3 आधार संवाद कर लिए हैं, काफ़ी इंगेजमेंट हुआ है, काफ़ी नए आइडियाज़ आए हैं, लोग अब बेटर समझ रहे हैं कि आधार क्या करना चाहता है। आधार के अंदर उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, कि कैसे फीचर्स नए नए लॉन्च हों, मंथली रिव्यूज़ हों, कि कभी ये भी हो सकता है कि कोई ट्रैक नहीं कर रहा, तो इसलिए किसी के आधार एनरोलमेंट में या किसी के एड्रेस अपडेट में या काफ़ी डिले हो जाता है, तो उसमें कुछ सिस्टमिक फ्लॉज हैं, क्या उनको कैसे एड्रेस करें, तो रेगुलर रिव्यूज़ करना। तो ये काफ़ी मेहनत का काम है। अभी हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं, जैसे अभी आधार एक्ट को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि काफ़ी डेटा प्रिवेसी पे एक अलग डीपीडीपी लॉ आ गया है, तो आधार एक्ट को, तो इसमें काफ़ी समय जाता है। TRAI में भी काफ़ी स्पोरेडिक है, क्योंकि मैं वहाँ चेयरमैन नहीं, वहाँ मेंबर हूँ। तो कुछ कुछ पॉलिसीज़ पे जहाँ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का इनपुट ज़्यादा होता है, वी गेट इन्वॉल्व, आई गेट इन्वॉल्व। इसके अलावा आई वुड से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है, जिसमें मैं एडवाइजरी बोर्ड पे हूँ, और जो एक टेक्नो फाइनेंशियल एडवाइजरी ग्रुप है जो फैब के प्रोजेक्ट्स को क्लियर करता है। एक वेफर फैब्स के लिए है, एक पैकेजिंग के लिए, मैं दोनों का पार्ट हूँ। तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि सरकार 50% सब्सिडी दे रही है। उसी बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट्स 20 से 30% सब्सिडी देते हैं। तो ये, और कंपनीज़ भी कभी कभार नहीं होती हैं, कंपनीज़ को भी समझ में नहीं आता कि किस तरह से बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। बिकॉज आप इमेजिन दैट दिस इज़ लाइक एंजल इन्वेस्टिंग, बिकॉज पावर पॉइंट के अलावा कुछ होता नहीं है। और जो साइज़ ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, वो छोटे से छोटे प्रोजेक्ट भी 500,000 करोड़ के होते हैं, और जब से बड़ा था वो तो खैर 50,000 करोड़ का था। तो इसमें काफ़ी मेहनत जाती है, इसमें बहुत स्ट्रेस होता है कि डिसीजन गलत हुए तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, कैसे सेफ गार्ड्स बनाए जाएँ। इसके अलावा मैं फाइनेंस कमीशन के एडवाइजरी काउंसिल में भी हूँ, तो उसमें एक आध पेपर्स लिखने हैं। तो ये सब स्पोरेडिक हैं, बट आई वुड से रेगुलर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर आधार और ISM का होता है, काफ़ी सेटिस्फाइंग है। एंड इसमें आपके जो रोल्स जितने भी है, सो इसकी वजह से आपको काफ़ी सारे ग्लोबल इन्वेस्टर से बात करने का इंटरेक्शंस भी काफ़ी रेगुलरली होते हो गए, who are looking to invest in India, etc. वो तो जब मैं क्रेडिट स्विस में था तभी भी होते थे, अभी भी एक्सिस कैपिटल मतलब इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर्स इन टाउन। सो जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं सब हमारे क्लाइंट्स हैं, राइट। सो उनको अगर कोई इंडिया के बारे में समझना है तो ज़रूर हमारे पास है। So अभी in your interactions with all these global investors, अभी what are they thinking about India? मतलब जो conversations आपके होते हैं इन सब के साथ, तो इंडिया के बारे में क्या बात होती है? देखिए, इन्वेस्टर्स भी एक मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ नहीं है। सी इन्वेस्टमेंट्स, the whole universe, or at least I would say the space is best considered like an ecosystem. तो इकोसिस्टम में बहुत तरह के स्पीशीज़ होते हैं। कुछ होते हैं जो मतलब वो चीटियों जैसे जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स होते हैं, कि वो आधा मिनट पे, 5 सेकंड पे, 15 सेकंड पे ट्रेड करेंगे, बाई सेल, और ओवर अ पीरियड ऑफ अ ईयर दे विल एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। सो दे आर दोज टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स. Their asks on what are the characteristics of a good market are very different from that of what I would call the elephants, जो वो पैसे लगाए और 5 साल के लिए छोड़ दिया कि ये कंपनी अच्छी लग रही है, प्रमोटर अच्छा लग रहा है, इंडस्ट्री अच्छी लग रही है,
वैल्यूएशन ठीक है, लगा दो पैसे। कुछ जो एकदम ही एक्सट्रीम है वो तो ये कहते हैं कि भाई ऐसी कंपनी में पैसे लगाओ जो कभी बेचने की ज़रूरत ही ना पड़े, कि आप परमानेंट इन्वेस्टर बन जाओ। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स हैं, बट आई वुड से दैट the reality that India has very strong medium-term growth potential is not lost on them. That India has, and these are all trite, often repeated remarks, but they're very powerful in the sense that if your workforce itself is growing at 2% a year and it compounds, it's a lot. If you are very far away from the productivity frontier, and there is a way to get there, and you are not having obstacles in the way, that's great. If your balance sheet is clean, and I call it, the marathon runners example, that would you rather, if someone has to run a marathon, would you rather choose someone who's already run 2 marathons immediately, or would you that someone who's well rested, अंदर में काफ़ी glucose stock भरा हुआ है, and then they start running. So India is more of the latter, कि बैलेंस शीट्स क्लीन हो गई हैं, लेवरेज कम है. आप देखें गवर्नमेंट का भी, एंड दिस इज समथिंग दैट मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज, दैट US economy, the US economy is the only one which is above its pre-pandemic path. See, most economies are now above pre-pandemic levels, 2019-20 के level से ऊपर हैं, but US is the only economy which is above its pre-pandemic path. And that is primarily because their fiscal deficits are gone through the roof. जैसे जैसे fiscal deficit बढ़ते हैं, you are kind of borrowing growth from the future. What people don't realize is that China, which is also done reasonably well, though it is well behind its pre-pandemic path, its fiscal deficits in aggregate are at the same level as they were in 2020, the COVID year. तो हम लोग यहाँ पे थे, इंडिया ने अपना फिस्कल डेफिसिट जोर से गिराया है. नाउ द क्वेश्चन टू आस्क इज कि चली रही दुकान की, तो फिस्कल डेफिसिट लेके फ़ायदा क्या है, मतलब कम करके क्या फ़ायदा हुआ. एंड दिस इज़ वेयर द मीडियम टर्म आउटलुक ऑन ग्रोथ स्टार्ट्स टू बिकम वेरी मीनिंगफुल. जैसे आप US की का एग्जांपल लें. US इज़ द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड. लोगों को लगेगा कि और हमें भी लग रहा था कुछ साल पहले तक कि अरे यार वो तो नोट प्रिंट कर करके इकॉनमी को ग्रो करा रहे हैं, और बिकॉज दे द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड दे डोंट फेस एनी पेनल्टी. तो दिस लाइक गेटिंग ग्रोथ फॉर फ्री, व्हाई कांट दे डू मोर. वो मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी और ये सब चालू हो गया था. But if you look at 20-30 year history and you see how the US net international investment position has changed, yani as a country, how they are now a lot more indebted than they were, say, 5 years back or 10 years back. You realize that, and then therefore the currency now needs to undergo an adjustment. You realize that there is no free lunch. So the fact that the government of India has been doing fiscal consolidation, कि वो काफ़ी डिसिप्लिन तरह से कि भाई पैसे बर्बाद नहीं करने हैं, जो पैसे हैं टैक्स पेयर के पैसे हैं उसको प्रूडेंटली खर्च करना है, अगर खर्च करना भी है तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अच्छा होता है. सो लॉट ऑफ दोज थिंग्स मेक इंडिया लाइक अ very healthy human being, well rested, about to run a marathon. And therefore, if you're an investor investing for 5, 10, 15 years, it is a place where you can still make mistakes. You can end up backing the wrong companies, you can end up backing the wrong sector, but it is broadly a good place to be. If you are a hedge fund, and hedge fund is also I would say a wrong characterization. Hedge fund लोगों को लगता है कि वो आज बेचो, आज खरीदो कल बेचो वाले हिसाब से. कुछ ऐसे नहीं होते, मतलब काफ़ी लोग 6 महीने 12 महीने के बेट्स भी लेते हैं. बट लेट्स से जो शॉर्ट टर्मिस्ट इन्वेस्टर हैं, जो बहुत जल्दी अंदर बाहर करते हैं, उनके लिए मुझे लगता है इंडिया थोड़ा अभी स्ट्रेच्ड हो गया है. तो 2-3 महीने पहले इंडिया वॉज एक्चुअली, आई वुड से 2 months बैक, इंडिया वॉज वेरी चीप और मच चीपर दैन इट यूज्ड टू बी. जो पी प्रीमियम टू वर्ल्ड है वो एकदम बॉटम पे, नियर बॉटम आ गया था, बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज. इंडिया की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस लोग डाउनग्रेड किए जा रहे थे. अब और डाउनग्रेड्स मेरे ख्याल से ख़त्म होंगे और अब हमारी इकॉनमी बेटर करेगी. तो बट मार्केट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इट.
तो मुझे लगता है कि अब मार्केट जो है उतना अच्छा, सो इसलिए जो 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 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं दे वेरी एक्साइटेड, कमिटेड, इन्वेस्टिंग इन बिल्डिंग अप टीम्स, तो लोग इंडिया टीम्स को बूस्ट कर रहे हैं. जो असेट एलोकेटर्स हैं वो इंडिया में और पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं. जो जो शॉर्ट टर्मिस्ट हैं उनको अब लग रहा है कि थोड़ा मार्केट शायद खिंच गया है. तो व्हेन यू से मार्केट्स हैव ऑलरेडी प्राइस्ड दिस इन, तो आर यू ट्राइंग टू से कि अभी ये जो लाइक स्टॉक मार्केट्स भी है जो टोटल इंडिया में मार्केट कैप एंड ऑल, तो इन द कमिंग फ्यूचर लाइक थोड़ा करेक्शन इसमें आ सकता है या स्टेबल रहेगा, लाइक व्हाट्स योर व्यू? सी नियर टर्म में मार्केट का क्या होता है वो तो जनरली इज समथिंग विच इज़ वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट बिकॉज देयर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स. वन कैन पुट आउट अ बेस्ट गेस. My best guess is that we see a time correction. So, meaning, and what time correction means is that, see, the stock market is earnings per share into price to earnings. So, and because the economy is growing, suppose the Indian economy grows at, say, 10 to 11% nominal terms, I think it should do better, but suppose that's a consensus number right now. Or EPS growth जो है stock market का on aggregate should be a slightly faster than that. So अगर 10-11 पे इकॉनमी है तो मैं भी 12-13 पे 14 पे इकॉनमी ग्रो करती है, तो ये मार्केट का ये अर्निंग्स ग्रो करती हैं. सो एवरी 3 months you are gaining about 3 to 4%, 3.5%. So forward earnings keep going up. Now if the P multiple remains unchanged, the market will still be going up. So what time correction means is that the headline remains the same, but because forward earnings are getting higher, the P multiple is normalizing. So it has been a time correcting market, I would say, for the last year and a half. और मुझे लगता है कि ये उसी स्टेज में रहना चाहिए. And especially after all the geopolitical turmoil which is going around, India-Pakistan war, plus the US Trump tariffs which are being imposed, तो ये सब भी आप फैक्टर इन करके बता रहे हो कि मार्केट्स? जो इंडिया पाक वॉर है मेरे हिसाब से, एंड यू नो टचवुड, जो मतलब जो एटलीस्ट वी बॉट अ डिटरेंट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो नॉइज ऑन दैट शुड नाउ डाई डाउन. मतलब उनको जो करना था कर लिया, हमने जो करना था कर लिया. फ्रॉम ऑल एविडेंस अवेलेबल, आई मीन they have now been beaten hollow, and उनको अपने एयर डिफेंसेस ठीक करने होंगे. अभी तो एयरफोर्स बेस ही रिपेयर नहीं हुए हैं, तो उनको एयर डिफेंसेस ठीक करने होंगे. काफ़ी अपने मिसाइल बैटरीज को रिप्लेनिश करना होगा. तो अगर वो तुरंत भी अटैक करने की कोशिश करें तो बहुत, मतलब मेरे हिसाब से उसमें नेवर से नेवर, बट काफ़ी साल के लिए अब वो मेरे ख्याल से पीछे बैठेंगे और फिर तब अगली बार फिर अटैक आएगा. ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स आई थिंक इज़ गेटिंग रियली चॉपी. उसमें आई थिंक रिस्क है. तो दैट इज़ व्हाट आई एम प्राइसिंग इन, फैक्टरिंग इन, विच इज़ दैट आई थिंक द अनसर्टेनिटी globally is going to be extraordinarily high. Because there are many resets that are being triggered by the Trump administration. And it is frankly not just the Trump administration. Some of the things that are happening, जैसे रशिया यूक्रेन है, या अभी इजराइल गाज़ा में जो कर रहा है, या किसी और जगह पे फिर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, तो क्या है कि इसमें अभी ग्लोबल सिस्टम अभी यूनिफाइड नहीं है. किसी को भी इतनी एनर्जी और बैंडविड्थ नहीं है कि वो जाके छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व, सब लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए हैं. यूरोप को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यूके को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यूएस को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. तो ऐसे में अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाती है, और मार्केट्स जनरली डोंट लाइक अनसर्टेनिटी. सो इन मोस्ट मेजर मार्केट्स इन द लास्ट 5 years, what we have seen is a significant, I would say, a positive reinforcement of buy the dip. कि मार्केट गिरा नहीं, खरीद लो, बहुत फ़ायदा होता है. Buy the dip in a markets which were supported by the Fed put. कि जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो फेड आके कुछ स्टिमुलस दे देगा, and cost of capital गिरता रहेगा वगैरह. So I think those were things that
allowed people to make a lot of money. My fear is that the problems we are seeing right now are not easily resolvable by monetary authorities. And therefore, I think the level of uncertainty will mean that the equity risk premium, which, as you know, is the additional returns that investors demand for investing in riskier assets like equities, I think that will rise from here. And it is, what I like to say, is not a modeled variable. यानी कि आप अभी बैठ के नहीं डिसाइड करेंगे कि नहीं देखो ERP में पहले 2% ले रहा था अब 4% लूँगा या 6% लूँगा. But the market start getting fatigued कि देखो 2 साल से पैसे नहीं बने हैं, अरे अभी करेंसी का क्या मॉडल करें पता ही नहीं है, एनर्जी प्राइस क्या मॉडल करें पता ही नहीं है. And as this uncertainty starts to trickle down, meaning that people figure out that this is actually really, really hard, then their investment horizon starts to shrink, and which automatically means that PE multiples come down. So this is how, this is why I think that PE multiples should be lower. The biggest problem, in my view, in the financial markets globally is the yield on the US treasuries. So I don't know if you've seen this, but there is this entity called the Budget Lab. It's supposed to be a bipartisan or a very neutral observer and analysis, provides analysis on US federal budgets. So उनकी एनालिसिस आई है, जो ये बिग ब्यूटीफुल बिल अभी प्रेजेंट हो रहा था अभी कांग्रेस में, उसके होने पहले ही स्कटल हो रहा है. अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है और उसके जो टेम्पररी प्रोविजंस हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, तो 2054 तक 2054 तक US फेडरल डेफिसिट और फेडरल डेट टू GDP will be 200% of GDP. There are only 2 countries currently which are higher than that, Japan and Sudan. Now, you don't want the US to be like Sudan, but and Japan is mostly internally held debt. US, 30% of the debt, 29% of the debt is held by foreigners. तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए और आपको रेट्स को हाई करना पड़ेगा. इसीलिए आप देखोगे कि डिस्पाइट द फियर्स अराउंड कि US इकॉनमी स्लो होगी, नो वन इज नाउ एक्सपेक्टिंग अ रिसेशन बिकॉज टैरिफ्स पे अनसर्टेनिटी काफ़ी खत्म हो गई है, काफ़ी कम हो गई है. बट so the US federal fiscal balance, and remember that US treasury yields are the risk-free rate for the world. Now, these are things which have been discussed for several years, so there's nothing new in what I'm saying. But we have to keep in mind that if the risk-free rate for the world is going to settle at 4.5%, and now 5% doesn't look distant. जब, if you remember, Jamie Dimon, जो JP Morgan के CEO हैं, जब उन्होंने कुछ साल पहले कहा था कि लेट्स बी रेडी फॉर 7% ट्रेजरी यील्ड्स, उन्होंने आगे थोड़ा मतलब ज़्यादा ही बोल दिया, बड़ बोले हैं. बट नाउ दोज लेवल्स आर नॉट लुकिंग इरेशनल. So imagine if that is the level of those, so then the turbulence that can happen. One side of the theory is कि बस अगर US ट्रेजरी भी मतलब अनअट्रैक्टिव है और उसके कारण US स्टॉक मार्केट्स अनअट्रैक्टिव हैं, so then more money flows into emerging markets, which is correct. There will be, if there is a devaluation of the dollar, which I think is imminent over the next 3 to 5 years, I think dollar will fall by 30% or thereabouts, or is likely to fall by 30% or thereabouts. If that happens, then it is very good for emerging markets कि लोग डॉलर छोड़ के emerging markets में आएंगे, तो India should get inflows. But if the uncertainty in the largest market in the world is so high, it will drag down the PE multiples all over the world. So मेरे हिसाब से that is a very big risk, and therefore when I'm talking about a time correction, I am relying on a reasonably resilient Indian economy with rebounding earnings growth and a declining PE multiple with a slight premium for India. So when you say अभी dollar, if let's say is likely to fall by maybe 30% over the next 3 to 5 years, तो अभी जो $1.85 के आसपास चल रहा है, that might become $1 is equal to ₹60. Okay, when I say that, I should have clarified. Thank you for clarifying it. So I'm talking about the trade-weighted dollar.
So every economy, as you know, has a real effective exchange rate. So the real effective exchange rate against 27 currencies, which is where the largest or the longest history is available. The dollar today is close to where it was in 1971, which was around the Nixon shock, and 1985, just before the Plaza Accord. And after both these episodes, the real effective exchange rate of the dollar fell by 30 to 38%. Now, हो सकता है कि ये इस बार 25 ही गिरे, but it is a trade weighted dollar which is correcting. Now, the decline will be, I think, much more steep against the Japanese yen, against the euro, against the pound. Well, maybe not against the pound, but mostly the euro and yen. So a lot depends on the currency's own fundamentals. जैसे इंडिया में क्या है कि अभी भी inflation is higher than that in the US. So for the Indian real effective exchange rate in the US to try to tally, if the dollar, if the rupee on RER is more priced in, I mean, inflation will kind of start adjusting it. So मेरे हिसाब से 60 तो I don't think is the likely scenario, but is a, in 5 years time, can we see a 77, 76? I think so. Got it. And we're talking about like the Trump administration also, and just wanted to touch base on a couple of pointers which recently happened. So US is talking about imposing a 5% tax on money remitted to other countries, and that can be like a huge hit for India because like the world's biggest recipient of remittances is like totaling about $120 billion a year. So what is basically the impact of this on India according to you, and why do you think like these things are happening in the ecosystem? So, so let's take a step back and look at the global monetary system. See, every country needs to have its own currency. I mean, you can think about an international currency and all that. It will be impossible to manage. Maybe at some point in the future we can get to that, but not now. So every country needs to have its currency. Now, how do you decide the exchange rates? Till, I would say, the 1930s, every currency was pegged to gold. So the value of your currency was dependent on how much gold you had as a country. 1930s में जब Great Depression हुआ, some people think that Smoot-Hawley and the bank failures in the US were the catalyst. Most likely they were. But around that time, everyone started breaking the peg to gold. And in that decade, it's a scary chart. Most currencies depreciated by 50 to 250% against gold. So a lot of it was competitive devaluation. कि किसी ने 20 किया तो फिर दूसरे बोला अरे उसने 20 किया मैं 25 कर देता हूँ, and then he said तूने 25 किया मैं 20 और कर देता हूँ. So all of that was happening, and I think the world realized that this was not productive, so we needed to have a stable monetary system. Now, of course, then wars happened, 39 to 45. So around the time that it was clear that the Germans were losing, work started on a new global monetary order. Now, what the US was the only dominant power at that time. So John Maynard Keynes, who was a very deep thinker, so he actually 1941 onwards, he withdrew to his country home and to think about a new monetary architecture. He promoted a new international currency and a new system. But he was with Britain, and frankly, if you reimagine 1945, so there's no Germany, there's no Japan, there is no Italy, there's no India and China because we were still colonies, or Chinese were still fighting the Civil War. And the UK was almost like a supplicant country to the US because it had been bombed out of hell, out to non-existence by the Germans, and the only reason they survived was because the Americans were supplying them tanks and aircraft and all that. So they had no say basically.
So the Americans then got away with a currency system where you have the dollar at the center. Every currency is connected to the dollar, and the dollar is then pegged to gold. So they said $35 per ounce. So we will not. So they also took responsibility that we will not be irresponsible. Now, why do you need this structure? Because, and it's simple arithmetic. So if you take, say, 30 currencies, 30 major currencies of the world, and these account for 95% plus of global GDP, so that's good enough. If you have to have liquid exchange rates, so as you know in finance, there's a bid-ask spread. So basically, the buyer, bids for something and the seller asks for something. There's always a spread between the two. In illiquid markets like real estate, it's a very wide spread, and liquid markets, it's a very narrow spread. You need a narrow spread for people to be able to trade. So you need to keep a very liquid exchange rate. Now, if you have 30 currencies, it is NC2. So basically, you have to combine them. So basically, hundreds of exchange rates are needed to be kept liquid. If, on the other hand, if you keep the dollar in the center and you do a hub and spoke, so every currency has a liquid exchange rate against the dollar. So if I have to go from, say, rupee to pound, I go from rupee to dollar, dollar to pound, and both are liquid. So my bid-ask spread is in check. So it is economically efficient. So which is why it is important to have that system, which is the whole role of a reserve currency. Now, the dollar became the reserve currency because the US was the only dominant power. The problem is that if there is a country that provides a reserve currency, it must run a current account deficit. Now, a current account deficit means that a country is consuming more than it produces. Because suppose I have to accumulate dollars and you are the US. Now, I have to provide you some good or service so that I get the dollars, because I want to signal to everyone, देखो मैं बहुत strong हूँ, मेरे पास इतने dollars हैं. So the US is running a current account deficit, which is why they're able to sort of give me the dollars. Now, over a period of time, as you can imagine, this indebtedness builds up. So the first sign of this, for the first breakdown that happened on this system was 1971, when Nixon was the president then, decided to shock the world and said, the dollar is no longer backed by gold. Because उनके इतने फॉरेन लाइबिलिटीज अक्यूमुलेट हो गए थे कि उनको लगा कि अगर लोगों ने सच में आके डॉलर मांग लिए तो हमें कंगाल हो जाएंगे. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई अब हम पेग नहीं कर रहे हैं. इट वॉज अ डिफॉल्ट. एंड आफ्टर दैट द डॉलर फेल बाय 38%. द ट्रेड वेटेड डॉलर फेल बाय 38%. फिर 6-7 साल तक फ्रीली फ्लोटिंग करेंसीज चल रही थी. उसके बाद पॉल वोल्कर जी, जो हु वाज पार्ट ऑफ द team that did the default in 71. So he was the Under Secretary of Treasury at that time. He was a part of the 15 people who went to Camp David and decided that, you know what, don't have to check with anyone, don't even tell our allies, just say that we are no longer backing our dollar with gold. The same gentleman, when he became the Fed governor, famously hiked rates, brought credibility back to the dollar, and the dollar again became the reserve currency. But because he had hiked rates so much, the dollar again appreciated. 85 में they went and said, देखिए भाई, ये बहुत ज़्यादा हो गया, अभी डॉलर का वैल्यू कम करना है. Now, the convenient thing in 71 and 85 was that the countries that you wanted to devalue against were pretty much countries that you were providing military support to. So the US has had and has military bases in Japan, in Germany, in a lot of these countries, Saudi Arabia. So they said, please, pretty please, but the fact is that there are military bases there, so that please also comes with iron hand in a velvet glove. So मान गए वो लोग. So the yen very famously appreciated by 40%. Over the last 54 years, the US has continued to run a current account deficit. So their international liabilities have kept growing. Today, the US owes the world, or today meaning as of December 2024, which is the last data we have, the US owes the world $62 trillion. It owns $34 trillion of assets. So the net international investment position is minus $28 trillion, which is minus 90% of GDP. If you draw this chart,
you will notice that till 2012, it was only minus 20%. It fell to minus 40 by 2018 and then minus 90 by 2024. Now, the reason why this happened, if you remember the fiscal deficit question I was talking about, till the time that they were disciplined with their fiscal, the world was very happy buying their treasuries. कि अगर डॉलर कलेक्ट ही करना है तो ये सेफ है, ये मतलब ये यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं वो बहुत सेफ है. But the moment you start spending like mad and your debt to GDP goes to a ridiculous level, obviously people become less comfortable owning your treasuries. And therefore they start owning your equities. उनको डॉलर तो खरीदने हैं तो उनको लग रहा है कि यार यूएस कंपनीज को खरीद लेते हैं, का स्टॉक खरीद लेते हैं. So now we have reached a level where it is unsustainable. If you see the chart, it is like plummeting. So now the US is saying, well, एक तो dollar has appreciated because dollar is now at the same level where it was in 71, in 85, and now needs to fall. Otherwise, we are completely uncompetitive. So now they are caught in a bind because the dollar is so expensive or so overvalued that their manufacturers, their service providers cannot compete. Now they need to arm twist people, put a gun to the head, or beg and plead, and say, please let the dollar fall in value. So this is part of the reason. They've not explicitly stated it. They actually officially deny it sometimes. But when you see why did they have to put reciprocal duties or tariffs on allies, you realize that most of the $62 trillion is to allies. So today's headlines were that UK now owns more US treasuries than the Chinese. Taiwan owns $1.7 trillion. So if you add UK, Europe, Scandinavia, assuming they're not part of the European Union, West Asia, then go further to Korea, Taiwan, Japan, it's all their allies. And so the dollar needs to fall in value against some of these large trading currencies. Frankly, India is not that important yet. So, I mean, it's very unlikely that it will be forced to, appreciate by 30% against the dollar. But I don't think we'll be allowed to depreciate against the dollar because then it will be a double benefit for India. Now, the biggest challenge in all of this analysis and this prognostication is that we have a new beast this time, which didn't exist in 71 and 85, which is China. Now, China is not, because this is the default. So first you say that I'm the reserve currency of the world, architect the whole system around me, and then you build up a lot of deficits, you spend like mad, and then once things are going out of control, you say, you know what, devalue the dollar. It is like a default. So if the dollar falls by 30%, it is like a default of 30%. So now it is not that countries that accepted this in 71 and 85 didn't see it, but they didn't have an option. China has an option. So China will negotiate, which is where I think the China-US negotiation becomes so important. So if the Chinese also, because frankly, for the world to be stable, and it's in everyone's interest for the world to be stable, if we allow the dollar to say, forget 30%, say 25% also, and the US equity markets correct a bit, the net international investment position becomes much more manageable in the US. So, and then the whole cycle can restart again. But anyway, we'll see how the new system comes up. But this is the background to it. So it was a longish answer, but hopefully it clarifies where we are. And this is not something that I expect to happen in the next 3 months. In fact, it is quite possible the dollar may appreciate in the next 3 months. But if you're thinking 3 to 5 years, I think it is a reasonable expectation that the dollar will be down sharply. And about the tax, which is like being remitted and all. Sorry. Yeah. So part of this dollar devaluation tactic or the desire to devalue the dollar. See, the US also realizes that the economy, or at least the global economy, is now much, much more complex than it was in 71 and 85. And they have to find ways to not attract capital. So what they are starting to do is, find ways that you say, oh, you know what? If you hold dollars outside India, I will tax you.
that if foreigners want to come and buy our assets, we will tax you. Now, sometimes the way the markets work, just the fear of this, just the threat of this will devalue the dollar. But frankly, I'm not sure that it's really going to work. And this one is more of a proposal. I doubt that it's something like that is going to happen. Got it. And even like Donald Trump also mentioned that Tim Cook, the CEO of Apple, he was like after the China Plus One thing that happened, so बहुत सारा production of Apple iPhones also was happening in India, and now he has requested him कि आप US में करो and India में ये सब नहीं होना चाहिए. So I'm just trying to understand like what are the relationships between India and US, and after all these things which are happening, is it that India US relations are like on the stage of weakening, or what's your view? See, this can be viewed or this can be answered in many different ways. But let's start with two. The first is how much is the US president really in control? And the second is what is the nature of US-India relationships, right? So let's think about, first discuss the US president's power and control. See, he's first and foremost a politician. A lot of what he says and does is for his voter base. What was actually a private conversation with Tim Cook need not have been brought up in public, but he did that to signal to his people that, look, I am putting pressure on everyone. So when Walmart wants to raise prices, and it guides that it'll have to raise prices because of tariffs, I mean, he's blasting them. They're saying, you made so much money in the last couple of years. Now, absorb the tariffs. You shouldn't have to. So remember that he has to maneuver the political system and the economy through what is a very tough and turbulent phase. And so in doing so, if he finds that he's made China uninvestable, but US is not getting the manufacturing jobs, and frankly, I don't think even he has an idea, and most of the economists who have opined on his tariffs agree that tariffs are not the way to solve the problem that he's trying to solve. Now, and therefore, it is natural for him to feel frustrated that the jobs that I want to bring back to the US are actually landing up somewhere else. So he is, I think, very cognizant of the fact that China needs to be weakened, but at the same time, he needs more manufacturing jobs in the US. So some of his comments have to be viewed in that light, and they're very consistent with that worldview that he wants to bring manufacturing back to the US. The question then is, will Apple start doing assembly in the US just because the US president has asked it to? And the answer is no. See, a lot of what he's trying to do, see, we all understand the grand objectives that he has, that there is a lot of inequality in the US, which has grown in the last 35 years. Most of the gains of growth in the last 35 years have gone to the top 10% of the population. Bottom 50% has been left out. Real median wage has barely grown. And he needs to solve that problem. He also needs to solve the problem that there is very little manufacturing skill set available in the US right now. And that if they were to get into a hot war, and which is why Peter Navarro mentioned and talked about the arsenal of democracy. When he was asked, why is it that the US wants 25% import duties on autos? And he said, because the autos are the arsenal of democracy. This is a phrase that was used by Franklin Roosevelt in 1940 to announce to the world that
it would be the arsenal of democracy that would build the fighter jets and the tanks and the ships that would then fight the industrial might of the Nazis. Now, he's invoking that kind of, so they want manufacturing. So he wants all of that to happen. But when he tried to set these duties very high, and there was a certain randomness in them, the markets panicked. Very soon, and therefore the 90-day pause came. Then, from what we've read, the US retailers went to him and complained that, look, we had stocked up well in advance, but if we don't see more shipments in the next 2 to 3 months, we are going to be out on looking at empty shelves, and then we'll have to start firing people. Now, it is believed that around that time was when he started waving the peace flag and saying that let's not, that I'm willing to negotiate with China. So let's not extend these high duties forever. So his objectives remain the same, but this pretty much defined the pain threshold. Now think about it logically. And a phone assembly job, and it is not because it can't be automated. I mean, it can be automated and no one is doing it. It is very hard to automate. Training robots to do that level of sophistication is very hard still, which is why you need humans. The humans are getting paid 14 to 15,000 rupees a month, $180 a month. In an economy where $85,000 is the per capita GDP. Minimum wage is basically 12 hours of. So if you take $180 a month, you can do 12 hours of minimum wage in that. Really? So I don't think these are practical demands. Just like him saying that Walmart shouldn't be raising prices. Really think Walmart has an option not to raise prices? So some of these, while they make headlines, they are his way of signaling to his people that I'm working for you. I doubt that it will meaningfully affect Apple's investments. The second part of the answer, which is the US-India relationship. Remember that we're talking about a $30 trillion economy engaging with a $4 trillion economy. These are two very large economies. I mean, 4 seems very small compared to 30, but what I meant to say is that 4 trillion is large enough. We are the 5th largest economy. Very soon we'll be the 3rd largest economy in the world. Now, even with China, which is now its strategic competitor, the US is willing to engage because it realizes that breaking apart is not going to help. So as an economy, as people, as observers, as analysts, as investors, we have to learn to live with a relationship which is not going to be black and white. I remember once asking the US ambassador to India at that time, this is 10 years back maybe, around 10 years back. And at that time there were some tussles happening on H-1B visas and all that. And so I asked, look, we are supposed to be forming the Quad, we are supposed to be allies. Why is this happening? He said, okay, so let me ask you a question. Which country do we have the largest number of trade disputes with? I don't know. China? I said, no, Canada. He said that, look, if we are going to have an all-encompassing relationship, there will be areas where we don't agree and there will be conflicts. So even as these things are happening, you look at the technology transfer that is happening on modular nuclear reactors. We are energy starved. The US is willing to transfer the technology. Even on the technology side, so if you look at electronics assembly or say semiconductor packaging, most of the technology is coming from the Americans. So I would not overemphasize the differences. The differences exist. They have to be managed. You can't wish them away. So just like it would be unwise to think that, US is an all-weather friend. Remember that India has chosen to retain its strategic options. So it is not willing to, and very rightly so,
go into the American camp. So balancing our own needs, strategic and tactical, between what say China wants, and we can't wish away the Chinese. Chinese are our neighbors. They're also the second largest economy in the world. They're also dominant in most of the large and fast-growing sectors. So allying with them is in our interest. So we have to handle the geopolitical aspect. We have to make sure that there are no border encroachments, that they're not taking advantage of us. But we have to engage with everyone as adults, as grown-ups, as a maturing country, and which will be much larger in 20 years than it is today. We have to learn to handle the complexities of the relationships. आपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि दैट चाइना, जापान, ये सारे कंट्रीज लाइक दिस इज समथिंग दैट यू स्टडी बीइंग अ पार्ट ऑफ द रोल दैट यू आर इन, राइट? तो ये जो भी अभी कंट्रीज है लाइक चाइना, जापान एट्सेट्रा, तो आपके हिसाब से लाइक इंडिया क्या सीख सकता है इन कंट्रीज से, एंड व्हाई डू यू थिंक लाइक व्हाट इज समथिंग दैट इज स्टॉपिंग इंडिया टू बिकम लेट्स से लाइक द ग्लोबल सुपर पावर? सीखने को तो बहुत कुछ है. जैसे आप चीन में देखिए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं जो शायद हम कर नहीं सकते, शायद क्या हम नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दे मेड सम शॉर्टकट्स विच आई थिंक विल हर्ट देम. बट वन इशू एंड वन पॉइंट दैट दे डू वंडरफुली वेल is decentralize. जैसे हमारे यहाँ क्या है कि मतलब शहरों के पास कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है. तो जैसे अभी बॉम्बे में हम देख रहे हैं कि कोस्टल रोड बना, द टाइम टू गो फ्रॉम वर्ली टू नरीमन पॉइंट इज कोलैप्स्ड. अभी जुलाई से मेट्रो चालू हो जाएगा, और इतने जो हमने 5-6 साल से जो कष्ट सहा है कि वो सब रोड्स ब्लॉक्ड हैं और ट्रेन्स भी नहीं हैं, अब सडनली रोड्स पे भी कैपेसिटी आ जाएगी और रेल्स भी आ जाएंगी. यही चीज़ हमें 500 शहरों में करनी है, बट वो नहीं हो पा रही. चीन ने किया. सो चीन आई थिंक has handled decentralization much better than us. And so local governments had almost entrepreneurial zeal कि मुझे अपना प्रोविंस डेवलप करना है. ऑफकोर्स में करप्शन भी बहुत था, बट कि मुझे अपने प्रोविंस में सो दे वर व्हाट आई कॉल पॉलिसी एंटरप्रेन्योर्स, कि वो कंपनी को, ग्लोबल कंपनी को उठा के खींच के लाना है, एक्सपर्टीज़ चाहिए, तो आइए आपको कहाँ फैक्ट्री लगानी है. कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, कि जिस तरह से, जिस ब्रुटैलिटी से उन्होंने ज़मीन खाली कराई या वर्कर्स को ट्रीट किया, यूनियनाइज नहीं करने दिया, ये सब इंडिया में करना गलत होगा और करना, दैट्स नॉट द कंट्री वी वांट टू ग्रो इन. बट एट द सेम टाइम आई थिंक अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं होता है और शहर हमारे एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे अच्छी नहीं होती है, तो कोई क्यों आएगा शहरों में? और लोग अगर गाँव में बैठे रहेंगे तो काम कौन करेगा? सो आई थिंक डिसेंट्रलाइजेशन एंड Tier 3 governance and the devolution of funds to Tier 3 governments is something that the Chinese have done wonderfully well, and I think there is a lot to emulate from that. The second is the desire to develop and own technology. Now, some of it is, I think, just the stage of development. शुरू में हमारे पास उतना रिस्क कैपिटल नहीं होता. जैसे लोग कहते हैं कि भाई इंडिया R&D नहीं करता या इंडियन कंपनीज R&D नहीं करती. दोनों ही चीज़ें सही हैं, ऑब्जर्वेशन एकदम सही है. बट आप ये देखिए कि अगर जो PVC पाइप बनाने वाली कंपनीज हैं, नो डिसरिस्पेक्ट, बट फाइनली इट इज़ अबाउट कि आपने ग्रैन्यूल खरीदे, उसको मेल्ट किया, वो पाइप में कास्ट किया, ठप्पा लगाया, बेच दिया. अगर उसी में आपके 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो रहा है, तो आपको रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं. तो लोग नहीं कर रहे हैं. अब जैसे अगर आपको स्टील प्लांट बना के ही अगर 20% ROCE बन जाता है, तो फिर आप क्यों R&D में? R&D इज रिस्की बाय डेफिनेशन. सो एट दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मोस्ट इकोनॉमीज हैव रिलाइड ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी. बट एट द सेम टाइम Japan, Korea, China, at this stage of development,
they had started to invest heavily in R&D. So चाइना की इकॉनमी पर कैपिटा जीडीपी 2007-8 में वहीं थी जहां हम लोग अभी हैं. बट मुझे याद है मैं जब ताइवान में था और मैंने जो SMIC जो चाइना की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है उसका IPO हुआ था 2003 में. तो आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम दैट हैंडल दैट IPO. आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू राइट अ रिपोर्ट ऑन SMIC in 2004. सो तो वो लोग तब से इन्वेस्ट कर रहे थे. हमने अब जाके इन्वेस्ट करना शुरू किया. उन लोगों ने जैसे जापान, कोरिया, ताइवान ने अपने मैन पावर पे हेल्थ, एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त तरह से खर्च करना शुरू किया था जब वो लोग स्टिल लोअर मिडिल इनकम थे. तो एक बार आप रिच हो गए, आपके पास पैसे आते हैं, गवर्नमेंट के पास टैक्स आता है, वो करना ऐसा नहीं करना कि वो भी आसान है, बट फिर भी इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि वो लोग कर पाते हैं. टू बी एबल टू कार्व आउट funds and execute on say near universal high school enrollment so that people can develop skill sets, focusing on early childhood nutrition and health. I think these are things that these economies have done much faster. Japan may not be a very correct example because frankly they grew developed over a 130-140 year period. हम लोग 50-60 साल में करने की कोशिश कर रहे हैं. Maybe Korea, Taiwan are better examples. And China's willingness to have socialized losses and privatized gains is something that I don't think we can or we should try to emulate. What I mean by that is that कोई भी बिजनेस आपको खड़ा करना है, उसमें रिस्क कैपिटल लगेगा. अब वो रिस्क कैपिटल अगर आपका वेल्थ पर कैपिटा कम है तो वो रिस्क कैपिटल इक्विटी तो हो नहीं सकता, तो आपको डेट ही लगाना पड़ेगा. आप समझ रहे हो ना? जैसे मान लीजिए 50 मिलियन टन स्टील प्लांट स्टील कैपेसिटी लगानी है तो आपको $50 बिलियन जाएंगे. 150 गीगावाट का पावर प्लांट लगाना है तो $150 बिलियन जाएंगे. अब इसमें आपके पास 75 बिलियन आपको इक्विटी कैपिटल चाहिए, मतलब 2:1 इक्विटी उसके लिए, पावर के लिए, और 1:1 स्टील के लिए. अब $75 बिलियन कहाँ से आएंगे कैपिटल? तो क्या होता है, चीन में क्या हुआ कि बैंक्स ने सबको लोन दे दिया, तो डेट इक्विटी बढ़ गई, कुछ कंपनीज बैंकरप्ट हो गई. वो बैंकरप्ट हुई तो बैंक्स को लॉसेज हुए. अब चूंकि उन्होंने फाइनेंशियल रिप्रेशन किया हुआ था तो वो सिस्टम में एब्जॉर्ब हो गया. हमारे यहाँ पे वो मॉडल चलेगा नहीं. अच्छा, जिनकी कंपनी चल गई वो बिलियनर बन गए. नाउ दिस इज प्राइवेटाइज गेन्स एंड सोशलाइज लॉसेज. एज एन इकोनॉमी इट वर्क वेरी वेल विच फॉर चाइना, बट हमारे यहाँ वो चलेगा नहीं, वो चलना भी नहीं चाहिए. मतलब देयर इज अ सर्टेन अनफेयरनेस अबाउट दिस. बट knowing that there is a shortage of risk capital because our wealth per capita is low, but invest करने की need बहुत ज़्यादा है, तो we have to find solutions so that we can sidestep some of these risks. So अभी अगर इंडिया की भी बात करते हैं तो like demographic dividend is one of the strengths जो young country India, like that is something which is always there. But इंडिया की आपके हिसाब से what are like some strengths apart from this and weaknesses जो हमें improve करने की ज़रूरत है so that we can also like become the developed economy? So let me start with the weaknesses and I would like to end with the strengths. So I think the biggest weakness is a lack of energy. You see, GDP growth, or I would say economic progress, and energy consumption are very deeply interconnected. So आपको किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करना है तो आपको एनर्जी चाहिए. किसी भी चीज़ पॉइंट ए से पॉइंट बी तेज़ी से जाना है तो एनर्जी चाहिए. आपको जो मिट्टी की ईंट को बेक करना है जिससे कि वो लॉन्ग लास्ट करे तो आपको एनर्जी चाहिए. आपको स्टील बनाने के लिए एनर्जी चाहिए. सो एनर्जी एंड सिविलाइजेशन आर वेरी डीपली इंटरकनेक्टेड. Energy and growth are very deeply interconnected, and therefore, and India would be among the few countries in the world, I think France and Japan are the only ones which are of reasonable size which don't have own sources of dense energy. So India, I think that's a huge disadvantage, and therefore we are vulnerable to energy price swings globally, and that's a strategic vulnerability.
I think a second big issue is our inability to control tier 3 governments. See, our growth is, in too few hands, let's say. So, जैसे the fact that we are a sixth of humanity and it shouldn't really be 4 or 5 people in Delhi who control the thing has been, well understood. In the last 20 years, we've seen significant focus on what state governments should be doing and all that. But, there is more inequality between the districts of Maharashtra than between Maharashtra and Bihar. So there are districts of Bihar जो महाराष्ट्र के poorest district से ज़्यादा rich है. अभी इतनी इनइक्वालिटी महाराष्ट्र के अंदर क्यों है? ठीक है, माना कि चलिए बम्बे है, पुणे है, नासिक है, नागपुर है, औरंगाबाद है, बट इसके अलावा भी तो बहुत डिस्ट्रिक्ट हैं. तो वहाँ पे ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि सब कुछ जो है वो स्टेट कैपिटल में है. जैसे अभी आप यूपी की सरकार देखें. नाउ यूपी हैज़ $1 trillion GDP टारगेट, बट इफ़ द चीफ मिनिस्टर रियली वांट्स कि मैं ग्रोथ को ड्राइव करूं, तो क्या है कि अब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही फाइनली लैंड एक्विजिशन हैंडल करेगा. उसका जो लास्ट माइल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी उसी के हाथ में. जो पावर और एनर्जी का मैनेजमेंट, इनफैक्ट टू ऐड टू द फर्स्ट पॉइंट, हमारे यहाँ भी बहुत ही ख़राब है. बिकॉज आर हाउस होल्ड पावर कॉस्ट आर अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड एंड इंडस्ट्रियल पावर कॉस्ट आर अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. इनफैक्ट मैं तो मतलब गवर्नमेंट के अंदर भी बोलता हूँ कि इज़ इट बेटर टू गिव फ्री पावर दैन टू गिव जॉब्स टू पीपल सो दैट दे कैन पे फॉर इट देमसेल्व्स. अगर आप इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बना दोगे तो वो जॉब्स क्रिएट करेंगे. उन जॉब्स को लेके लोगों को तनख्वाह मिलेगी, उससे वो बिजली का आप उनको ही फ्री देते रहोगे तो फिर तो आप इसमें चक्रव्यूह में फंसे रहोगे. So anyway, energy is one. I think local administration is, I think, a massive challenge. The third is, I think, our inability to accept and drive scale in organizations. जैसे कभी कभार ना आपको ग्लोबली कम्पिटिटिव होने के लिए आपको बड़ी कंपनीज की ज़रूरत पड़ती है. जैसे आप शू मैन्युफैक्चरिंग ले लें. शू मैन्युफैक्चरिंग जो है, जूता बनाने की जो कंपनीज होती हैं, वो एक एब्सोल्युटली लेबर इंटेंसिव, मतलब एंड वेरी लो एंड लेबर. 10 से 12,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीने में, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी फॉर सर्टन सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन. यू कैन एक्चुअली ऑपरेट अ शू फैक्ट्री. सो इज़ वेरी लो स्किल, 2-3 महीने में लोग सीख लेते हैं. नाउ द चैलेंज इज दैट when we set up these factories, we set up 5 lines, 10 lines, 20 lines. जब ताइवानीज़ और वियतनामीज़ और जापानीज़ कंपनीज़ और चाइनीज़ कंपनी सेटअप करती हैं तो 200 लाइन, 250 लाइन की फैक्ट्री सेटअप करती हैं. जब हमारे यहाँ पे वो प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव स्कीम चालू हुई तो सबने कहा कि भाई जब 2,000 करोड़ की स्कीम है फुटवेयर के लिए, चलो 20 करोड़ का मिनिमम थ्रेशोल्ड रखते हैं. आपको 200 करोड़, 250 करोड़ का 8 से 10 कंपनीज को देना पड़ेगा जिससे कि वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो. अगर नाइकी को 500 मिलियन पेयर साल के चाहिए तो वो आधा मिलियन, 1 मिलियन के ऑर्डर्स किसी को नहीं बांटेंगे. वो चाहेंगे कि वो कम से कम 10 मिलियन, 5 मिलियन शूज़ तो लो हमसे, मतलब बनाओ हमारे लिए एक साथ में. सो उस तरह की कंपनीज ही नहीं. सो क्योंकि हमारा इतना बायस था कि SME करेंगे, MSME करेंगे, तो हमने बड़ी कंपनीज को बड़ा ही नहीं होने दिया. एंड आई थिंक दैट शॉर्टेज इज़ वन ऑफ द रीजन जहाँ पे हम लोग फुटवेयर, एपरल, इन सब चीज़ों में बहुत पीछे छूट रहे हैं. बट इट इज़ नॉट द गेम इज़ नॉट लॉस्ट. आई थिंक वी कैन गेट देयर. On the strength side, we have many strengths. So we have sorry, and one more weakness which I think we need to be cautious of and actively prevent that risk from becoming bigger is that of inequality. See, we are trying to achieve something जो दुनिया में हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया, which is grow rich while being democratic.
सी एक तो ये है कि जितनी भी कंपनीज वेस्ट में जो रिच कंट्रीज हैं, दे वेंट फ्रॉम लोअर मिडिल इनकम टू प्रॉस्पेरिटी ओवर, मतलब 150 से 200 साल उनको लगे. दे ग्रो एट 2%, 1.5% और ग्रो करते रहे. हम चाह रहे हैं कि 1990 में जब हमें वो हुआ, 50 से 60 साल में हम लोग प्रॉस्परस हो जाए, विच आई थिंक इज पॉसिबल, इज डूएबल, रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क. But you have to understand that you have to grow at 3 to 4 times the pace at which the other countries grew, and that means driving a car. That means taking a lot of policy risk, जो हम कभी कभार लेने को तैयार नहीं होते. So everyone says कि नहीं ऐसा हुआ तो ये टूट जाएगा, वो टूट जाएगा. आप रिस्क नहीं लोगे. So China has grown over 40-50 years by taking a lot of policy risk. So I think we need to have that risk appetite कि बस कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, बट हमें सबको ही बंद नहीं कर देना है. एंड आई थिंक that problem is something that will be an issue for us going forward also. On the positive side, I think what we have learned, and then there was the inequality problem, that at this stage of development of the economy, there is an surplus of workers and there is a shortage of capital. So क्या होता है इकोनॉमी में, वट एवर इनकम 100, अगर 100 रुपये की कमाई हुई तो इट इज स्प्लिट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर. नाउ if labor is in surplus and capital is in shortage, the bargaining power of labor falls, that of capital goes up. So which is why nifty earnings are growing faster than nominal GDP. Now, it is not inevitable, though this is what Arthur Lewis growth model and all of that say. Like between 2012 and 2023, despite the economy growing and there being a surplus of labor, by providing rural India with roads and electricity and phones and toilets and cooking gas and all of that, we managed to give them better productivity, and therefore consumption inequality actually fell. Now, can we keep doing that? So it is not inevitable, but we have to address that. अगर वो नहीं किया और 5 साल और 10 साल और अगर inequality बढ़ती रही, so then we will see a massive course correction, and which will then slow us down for several years. Because those are the democratic asks. So these are the risks. On the positive side, on the strengths that we have, is exactly this democracy, that we have a very noisy feedback system. Noisy meaning a very, very active feedback system, which appears like noise, but underneath, because that forces course corrections in ways, sophisticated ways, which no human can ever design. Like you think about the US, right? I mean, it is so chaotic. हमेशा कुछ ना कुछ गाली गलौज, झगड़ा फगड़ा चलता रहता है. But you look at over the 100 years, कहाँ से कहाँ पहुँच गए. So having that level of debate, discourse, decision making slows us down slightly, but the direction of travel, जो अटल जी ने कहा था एक बार कि वो परवेज मुशर्रफ को कह रहे थे कि जनरल साहब, जनतंत्र की चक्की धीमी पिसती है बट महीन पिसती है. मतलब you move slowly but you move very firmly forward, and so that is a strength, and I think it is something we should cherish and see the mechanism through which it works. I think the technology stack and ecosystem that we have built is absolutely cutting edge, and not just because I work for Aadhaar, but जिस तरह की प्रॉब्लम्स को हम अब सॉल्व कर पा रहे हैं, वो 15-20 साल पहले हम इमेजिन नहीं कर सकते थे. तो पॉपुलेशन स्केल की आप जैसे हम लोग अभी आधार में 9 करोड़ ऑथेंटिकेशन रोज करते हैं, और कोई भी ऐसे तो है नहीं कि वो बस खाली ऑथेंटिकेशन करने के, उसके पीछे कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है. तो आप इमेजिन करो कि वो ट्रांजैक्शन ऐसे थोड़ा कोई ऑथेंटिकेट करता रहता है अपने आप को गेम खेलने के लिए. तो इसका मतलब है कि काफ़ी हद तक ये और इसको हमारा टारगेट है कि इसको 20 से 25 करोड़ दिन का करना है. So there is and this whole India stack, I think it gives us confidence that we can build layers on top of it. We can use this to give out small units of credit. जैसे अगर आपको इस इकोनॉमी को सस्टेनेबली ग्रो करना है विदाउट
massively increasing inequality, you have to have the ability to issue small units of capital. और वो करने के लिए आपके पास डेटा और ये इंडिया स्टैक होना बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज एडवांटेज. आई थिंक आर टैलेंट, आई थिंक दैट as the world goes through demographic pressures, India, not just heads and hands, I think skilled heads and hands. Now unfortunately हमारा skill base बहुत deep नहीं हो पा रहा है और हम लोग को और तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा. बट जो है भी उसी का मोनेटाइजेशन, आई थिंक, जैसे मुझे लगता है जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में हो रहा है, एंड इट इज़ अ मैसिव इनफ्लो of expertise. So it is not just about the dollars we earn. It is about some of the most cutting edge chips are being designed in India. Some of the most cutting edge electric vehicles are being designed in India. Some of the most cutting edge materials are being designed in India now. And it's a matter of time before some of these individuals pick up their bag and set up their own company. This is how innovation and technology expertise comes. So we have a talent pool. We have massive pipes, and we are also a trusted partner of the world. मतलब अगर माइक्रोसॉफ्ट को अपने सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर यहाँ कोड करवाने हैं, तो it doesn't have to worry that somehow India will take it up and copy paste and say देखो भाई अब हमारा हो गया, जो चीन ने किया उनके साथ. So तो ये I think are huge positives for us. The fact that we are so far away from the productivity frontier, and because of democracy, because of our bureaucracy, and I'll spend some time on that, the hurdles towards getting there are actually fading, or rather getting reduced, is also a big positive. And most people think that the bureaucracy is a problem. Bureaucracy is a problem. I mean, I don't think, but you see the direction in which the changes are happening, and you'll actually feel excited that look, जैसे जो the joint secretary of 20 years back is very different from the joint secretary of today. So maybe because of their lived experience, maybe because of the different incentive structures, because the government encourages pro-market thinking, that how do we drive growth, instead of just demonstrating power and authority. So you will find that they're much more willing to cooperate with the private sector. So these are very deep-rooted changes, and therefore very hard to reverse for individuals also. So even if, say, like in China, if the central leadership changes its mind, things will start changing very quickly. In India, it'll take much longer. So China में भी ऐसा नहीं है कि वो शी जिनपिंग ने कह दिया तो वो कल हो जाएगा. वो भी बड़ी इकॉनमी है, बट इंडिया में इट्स गोइंग टू बी मच मोर डिफिकल्ट. सो आई थिंक द चेंजेस आर डीप रूटेड. The democratic forces act slowly, but they act very firmly, and I think the human capital, while there is so much more that we need to do, the human capital that we are starting to sort of train and develop is going to be of huge value. So it's not just GCCs; it's also about talent being sent outside. जैसे nurses to the UK, farmers to Italy, plumbers to Germany, or engineers to Germany, and all of these places actually need legal immigration, because they're struggling with illegal stuff. So and there are estimates that the remittance income, which is, say, gross inbound remittances, are about $120 billion. Can actually be $250 billion in a decade. So there are many positives, and it is not just about $100 billion extra, which frankly is like 2.5% of GDP. It is about the consumption that triggers, the multiplier that triggers, the goodwill that creates, the pipelines, the business linkages that creates. So there's a long way to go for us to go. Lots of positive, and I'll maybe end with this. The fact that
We have cleaned up our banking system. Most non-financial companies have very low leverage. The banking system itself has very low leverage. The NPAs are very low. The government is deliberately ceding space and opening up the capital account. So imagine that the 10-year bond yield today is below 6.3. And it is this relentless fiscal discipline of the government which is behind the inflation numbers starting to come down and the cost of capital for the whole economy starting to come down. So all of these put us in a very strong position. Imagine that your cost of capital or 10-year bond yield was 8% and China was at 4%. Today you are down to 6. China has fallen, of course, to 1.8, but China has different issues now. So when it comes to actual cost of capital competitiveness, I think India is far better, and I would say best placed than it ever was. We have learned how to work our capital markets better. So access to risk capital is much better. And some of these things, move slowly, but when they compound over many years, they can create a lot of magic. Very, very exhaustive answer on the strengths and weaknesses. In the interest of time, so last question which I'd like to take. You have been on the Economic Advisory Council, and that is something which is also like a very, very big thing. तो इसमें like आपका सबसे memorable interaction क्या होगा with the Prime Minister, and आपने उनसे क्या सीखा है? उनसे सीखने को तो बहुत कुछ है कि आई थिंक उनकी जो सुनने की क्षमता है कि 3-3.5 घंटे की मीटिंग्स, कभी कभार वो नवरात्रि के बीच में वो जैसे उपवास भी कर रहे होते हैं, वो खाली गर्म पानी पी के, और वो मीटिंग 6 बजे शुरू हो और 9:30 बजे ख़त्म हो, और 9:30 बजे भी उनकी आंखें वैसे ही पेनिट्रेटिंग आपको लगेंगी और उनके सवाल वैसे ही इंसाइटफुल होंगे. सो आई थिंक हिज एबिलिटी टू listen, imbibe, and he really listens. See, one of the things I have seen from other people who are in positions of power, that very often they don't really listen. मतलब वो अपने आप में इतने खोए रहते हैं कि वो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ और ही सोच रहे हैं. But when he is sitting in a meeting with you, he will be listening with rapt attention. Sometimes you feel as if मैं इतना important भी हूँ क्या? But he is listening with rapt attention and also retaining. तो और ये तो मैं EAC-PM के ज्वाइन करने के पहले की बात बता रहा हूँ कि 2015 में नहीं 2016 में, 15 में मैं पहली बार मिला था, बट 16 में एक मीटिंग हुई जहाँ पे कुछ 13-14 लोगों को बुलाया गया था प्री बजट डिस्कशन के लिए. He had a pad and a paper and a pen in front of him, but he wasn't taking notes. 13 लोगों ने कुछ बोला, and then in a 30-minute speech at the end, he summarized all of what people had said. Without noting it down. Without taking notes. So, I mean, it is absolutely, I mean, I wish I could do that. So it's not just about listening, but imbibing and taking जो निचोड़ कहते हैं उसका, वो उसको रख के दिमाग में रखना. So unbelievable memory and attention. So yeah, there's a lot to learn. Last question which I ask all my guests. So if you were in the shoes of Kushal and if you were interviewing Mr. Neelkanth Mishra, what is that one question you'd like to ask him towards the end? So one question would be, if you really take a long lens and think about the Indian financial system, say 15-20 years later, I mean, how would that be different from where we are now? And I'm assuming you want the answer as well. Yeah. So the answer would be that our financial integration with the world would be much deeper than it is today. We would, so just like, we have a lot of inbound remittances. We have started to see a lot of outbound remittances. So even in the area where you and I live, we see a lot of foreigners, number of foreigners who are now setting up. And if you've read William Dalrymple's
the white Mughals. That a number of, because India will give the kind of growth, and so there will be a lot of foreigners who come in. So there will be foreign expertise in India, Indians sitting outside, much more accepted. There will be Indian companies abroad, investing abroad. There will be foreign companies. Everyone will need to have a presence in India. Indian government bonds, I think, are going to be among the safest asset classes in the world, at least for the next 5 years. Let's see what happens after that. Indian venture capitalists will be much larger than they are today. So, and I won't be surprised if in 15, 20 years' time, India can be a reasonable part. I'm not saying that it will be a very large part, but a few percent points of reserve currency assets for many of the countries abroad. Just like people, when they diversify away from the dollar, are starting to hold some pounds and some Aussies and Canadians. I think it is inevitable that over a period of time, I think, and therefore the rupee starts to become a much more useful currency for Indians traveling abroad. Someone had told me, and I think it's fascinating, that till the 1970s, the rupee was a valid currency in Dubai. Oh, okay. Yes, and until independence, even in Singapore. So, so India had very deep connections, and remember that this was a very large economy. It was because of the partition and a lot of the things that happened before and after that the rupee's area of influence got shrunk. But when I hear about UPI being used in Singapore, in Dubai, I see, well, we are starting to move in that direction now. So as the rupee becomes stable, as our reserve currency status starts to get embellished, I wouldn't be surprised if the rupee itself becomes much more internationalized than it is today. Yeah, I think we'll wait for that moment to happen. Yeah. And thank you so much, sir, for doing this. Very, very insightful conversation, very, very intellectual. Thank you so much once again for your time. Thank you, Kushal. And I'm sure audience is going to get a lot of value from this. Thank you for having me. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए. हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.